That my screen is visible. Yes, Yes, it's visible. yeah. Hmm. Ah. So I will discuss about the basics of drones. So what is a drone? Drone is a kind of a UAV, unmanned aerial vehicle. Okay, so what is a UAV? It is referred for hmm. So drone is a UAV, unmanned aerial vehicle. Unmanned aerial vehicle is commonly used for a drone or an RC plane, and it is used wherein which is controlled by without any human pilot, crew or passenger on board. The flight of UAV may operate under remote control by a human operator as or with various degrees of autonomy such as autopilot assistance or maybe even up to fully autonomous aircraft that has no provision for human intervention. Now, all the drones like tricopter, hexacopter, quadcopter, single rotor, and these RC plane, both RC planes, fixed wing hybrid rotor, and fixed wing rotor, all these come under UAV only, unmanned aerial vehicles. Today we will only discuss about the quad rotors. What are they? It is a rotor craft with four arms, each with a propeller, one pair of which spins clockwise while the other spins counterclockwise, enabling the craft to hover and maintain stability. They come in several different configurations: H frame, X frame, and plus frame. We can use any of these frame for while using a drone. Now, a drone has a total of 6 degrees of freedom. First is moving upward and downward about z-axis. Second What's is the moving difference forward and between backward plus about frame and x-axis. And third is moving leftward and rightward about the y-axis. what's the difference between plus frame and X frame? Mhm. Plus trim, it's just the difference of how the drone will look from the above, from the outside. It's not much that of a difference. Okay. Hmm. So, and the fourth degree of freedom is your that is rotation about the z-axis. Now it can rotate clockwise and anti-clockwise about the z-axis, and it is called as yaw. Now rotation about the x-axis is called roll, and rotation about the y-axis is called pitch. Uh, therefore the drone has a total of 6 degrees of freedom. Now what are the forces acting on a drone? First is weight, that is the gravitational pull due to the earth. Second is lift. Lift is the vertical forces acting on the drone, which balances the weight of the drone. And the thrust is the normal force acting on the rotor plane of the drone. There is also a fourth force called as drag. Now it is when the drone is moving, it is the air resistance which act on a drone, and it is the fourth force. Now coming up to the controls of a quadcopter. The first control is moving up or moving down. For moving up, we increases the speed of all the rotors, and for moving down, we decreases their speed. It's just simple and very easy. Hmm. Now, when we come to moving forward and moving backward. So for moving forward, we we decreases the forward velocity of the motors. We decrease the velocity of forward motors and increases the velocity of backward motors, which changes its pitch. And as you can see here in this GIF, the pitch changes because of which the drone moves forward. And similarly, it is for backward. The motors in the front, the speed of motors in the front increases, and the speed of motor in the front are decreased, because of which the pitch of the
drone changes and it moves backward. Same is for moving left and moving right. It For moving left, the speed of the right motors increases and the speed of left motor decreases, and therefore its role, which ro- role and pitch I explained in the degrees of freedom. The role of the drone changes, that is, it bends towards the left and therefore it moves towards the left, and by moving towards the right, the speed of the right motors decreases and speed of left motors increases, and it bends towards right, which make it moves towards the right direction. Now about the yaw, that is rotation about the z-axis. Hmm. For rotation about the z-axis, the opposite the velocity speed of opposite motors increases and the speed of opposite motors decreases. Speed of one pair of opposite motors increases and speed of other pair of opposite motors decreases. And by this I mean for the rotation in anti-clockwise direction, the speed of front left motor increases as well as back right motor also increases, and the speed of back left motor decreases and speed of back right motor also decreases. Therefore, it rotates anti-clockwise. Now, for rotation about clockwise, the speed of front right motor increases as well as the speed of back left motor increases, and the speed of back right motor and front left motor decreases. Therefore, it rotates clockwise direction. Now, we have the PID control, which is proportional integral derivative controller. General overview. PID control is a control loop feedback mechanism which is widely used in industrial control systems. PID control, it is a three-term controller and it uses the feedback obtained and to compute the output. That is the control mechanism. Now, what do I mean by control loop mechanism? Here you can see, I hope everyone can see my mouse pointer. Yeah. Okay, so here we can see we get an output which is the PI from the PID controller we get an error. Okay, the error is the output of the feedback control. Like we we want something to stay at a certain value, that is the desired set point, and we have the current value of the controller. Now error is the difference of the current value and the desired set point. So from the error it computes the signal that is to be transferred to the plant, and hence we get the output, and the output again gives an error, that is difference between the desired set point as well as uh, difference between the desired set point as and the current value of the plant which is to be controlled. Now the first is proportional control. It is just a error term multiplied by a constant value, which is, and the constant value here is termed as kp. वीडियो नहीं चल रही क्या? So एक्सक्यूज मी uh, भैया वो एरर मतलब किस चीज को लेके एरर हो रहा है वो नहीं समझ आया. okay, so I will explain now. Like in this code you need to ignore everything except these third lines. Now just focus on the line 35 to 45 and you need to ignore every other line.
don't focus on it. Okay, Okay. so let me just run it. So what I'm doing here, the car, here you can see the car, it moves forward and backward. Okay, so what I'm trying to do, it's what the car is want to do is that it's want its position to stay at the 0,0. Now currently the PID control is off. Now as soon as I switch on the PID control, Hello, sir. it Actually, what is the PID control? now I'm explaining that only. Okay. Like so currently the PID control is off and we want the car to be at zero. We are moving the car for creating a disturbance, a slight disturbance. Okay. So the error term is distance between the 0,0 point and the current position of car. So when I switch on the PID control, it moves backward. This is what PID control is about. Now let me show you about another example. Bhaiya, is PID control and the error same? No. The error PID control computes the error. Okay, okay, I got it. Uh, Here actually it was a video, but it is not playing. Give me a minute. It was actually a video instead of photo. I need to show. Okay, so I hope that my screen is visible. So here the error is, so like what we are doing here, the car has to maintain on the blue line. Car has to constantly move on the blue line only, and when we changes the blue, and I will explain what is the error. Like here when the car is here, the error is the distance between these two lines, the current position of car and the position of blue line. And when the car is here, I hope you can see my pointer. When the car is at this position, the error is the distance between this line as well as and the distance between this line. That is the desired line. Okay, so now I hope you get it. Like here we are controlling the car to move towards this uh, blue line towards the central line. So now I will explain what is the proportional gain. That is the first term of the PID. PID consists of three terms: proportional term, derivative term, and the integral term. I will explain each of each of these one by one. Okay, so proportional term is just the error term multiplied by a constant value. Now as you can see here, the steering angle is the constant of proportional term into the cross track error. That is the distance between the current position of the car and the blue line, that is the required position of the car. Now as you can see here, when the blue line changes abnormally, the car tends to do move towards it by getting the error. Okay, so PID control is this only, and this is about the only the about the proportional term. And then when I explain about this here in this block example, only think about only see following, only see the line 81 to
88. Only focus on this line. Okay. So here. So when the so now what we are doing here, like the block. So here the block has to orient itself at the midpoint of such that this block which is it is getting the image from the camera, it has to orient itself such that the block is at 0,0. Okay. So now when we only see about the KP control, only the proportional control. We are moving the car, we are disorienting the car, and when I switch on the PID control, it is trying to orient itself. Okay, but it has a lot of inertia. As you can see, it is a lot of inertia, and to reduce that inertia, what we do? We introduce a derivative term, which is the change in error term multiplied by a constant value. Here the constant value is KD. Okay, so I hope you are getting it now. Hello. I hope that you are getting what I'm trying to say. Okay, so I will continue. Bhaiya, the derivative term is that how fast the error is changing. Here the derivative term is how fast the error term is changing. Yes, you are right. How fast the error is changing, and we denote it by the differentiation of the error term. Okay. So now when I induces the derivative term also. Bhaiya, the proportional term is just showing the error. No, the proportional term is the value is proportional term is error term multiplied by a constant value. Now, as I was showing in this video, as it is shown in this video, like suppose you want your car to follow this blue line, and you know the position of this blue line, and suppose for instance your car is currently here at this point. I hope everyone can see my mouse pointer. Suppose the car is currently at this point. So what is the error? Error is the distance between this blue line and the position of this car. Okay. Yes. So now I hope that everyone understands what error is exactly. So we are multiplying it with a constant term to adjust that error according to us. Yes. Okay. And that derivative term is derivative term is introduced to increase the damping, so that the damping increases and the car has to stop. Car stops nicely. It does not overshoot ना करे. It does not overshoot. Okay. So now here you can see I am first disorienting the car, and when I switch on the PID control, it's orienting itself. I mean, still does have inertia. Let me decrease the PID. Okay. So now when I introduce the damping term, the differential term, as you can see here, it orients itself and it does not show any inertia. Okay. It does not show any inertia with the differential term. And anyone has doubt till now? Does anyone have doubt till now?
Bhaiya, can you show the same program by changing just one value KD equal to 0 so that we can analyze what's the difference if we don't use the derivative term? Okay. So currently the KD is 0 and suppose the KP is value of KP is 5. Okay. So now I'm changing the orientation of this car. क्या हो गया? यार ये क्या हो गया? Wait. Fuck यार. Okay, so now as you can see here, the value of KP I've kept as 5 and the value of KD as 0. Okay, so now I'm moving it, disorienting it, and when I switch on the PID control, it's moving towards the block and it's overshooting a little. Everyone can see that it is overshooting a little. Okay, so it's because of the inertia of the car. I hope everyone understands the Newton's first law of motion, that is the inertia. And now the derivative term is the damping. Its derivative term is for damping. Okay. Now when I introduce the derivative term, the inertia will decrease. As you can see, the overshooting decreases a little. It is there, quite still there, but it decreases quite a lot. Okay. And now we have the integral term. I've explained this pattern. Sorry to interrupt you. One second. Does anyone in this week has any problems with Hindi language? मतलब हिंदी से किसी को कोई प्रॉब्लम है? भैया फॉर मी भैया. No. Okay, someone said okay. तो ठीक है. Charles, you can switch to Hindi in between if you wish. Up to you. Okay. हाँ, तो प्रोपोर्शनल एरर क्या है? एरर टर्म मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट वैल्यू. मतलब जैसे इस वीडियो में दिखाया है, यहाँ पे कार को ब्लू लाइन फॉलो करनी है, ठीक है, और कार की पोजीशन यहाँ पे है अभी. It's suppose the position of the car is currently here. Let me close it for now. The car has to follow a blue line follow करनी है और कार की पोजीशन अभी यहाँ पे है, इस वाली पे, ठीक है. एरर टर्म होगा this value minus this value, the position of blue line minus the current position of car, and the proportional gain is just a constant term multiplied by the error. Okay, and differential term is a constant term multiplied by the change in error, and we write the change in error as derivative of the error. Okay, and next we have the integral term. हम अब integral term है. So what is the integral term? It is sum of error term over a period multiplied by a constant. Okay, मतलब जैसे यहाँ पे है, तो इंटीग्रल टर्म क्या है? एरर की वैल्यू हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐड होती जाएगी, तो वही है एरर टर्म. हम लोग एरर टर्म सिर्फ तभी लिखते हैं जब उसकी वैल्यू बहुत कम हो. जैसे यहाँ पे है,
एरर टर्म सिर्फ तभी लिखते हैं जब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 0.1 है. फॉर एग्जांपल, let me show you with an example. Now the disturbance is very less. Okay, the disturbance is very less और अब उसको ओरिएंट करने में प्रॉब्लम जाएगी. एक सेकेंड ना. I need to show this video. Okay, so now through this visual, I will explain you what is the integration term is for. Okay, so as you can see, because of the pebbles, the car is displayed only a little, and because of little displacement, the force, the value, the proportional gain and the derivative gain, both of them are not enough to orient the car. Okay, so therefore we have to also introduce another term, which is integral term. Here the error okay, so when we introduce the integral term, so when we introduce the integral term, it adds the values of all the error terms, and it tends to orient itself automatically. When the integral term is तभी होता है जब डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो. अब जब डिस्प्लेसमेंट कम है तो प्रोपोर्शनल गेन और डेरिवेटिव गेन इनफ नहीं है कि कार को वापस से ओरिएंट कर सके. इसलिए इंटीग्रल टर्म ऐड किया. वो एरर की सारी वैल्यूज को ऐड करते जाएगा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और कार फिर डायरेक्ट अपने आप 0,0 यानी ब्लू लाइन पे ओरिएंट हो जाएगी वापस से. ठीक है. I hope every one of you get it. What is the integral term? समझ आया? भैया एक डाउट आया कि shall I continue? कि इंटीग्रल टर्म से अगर वो सिर्फ इंटीग्रल टर्म हम लोग क्यों नहीं यूज करें? मतलब कि अगर सिर्फ इंटीग्रल टर्म करने से सारे एरर्स पीछे के सम करने से वो स्ट्रेट लाइन पे आ जा रहा है, तो सिर्फ इंटीग्रल टर्म का ही यूज कर रहे हैं. मतलब क्यों नहीं कर रहे हम लोग? प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव भी फिर क्यों यूज कर रहे हैं? समझो एरर बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो अगर एरर यहाँ पे कार की पोजीशन यहाँ पे है समझो, तो एरर बहुत ज्यादा कहलाएगा वो. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आते आते सारे एरर टर्म्स ऐड करते करते इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. फिर ये ओवरशूट करेगा. ओके. फिर ये ओवरशूट कर जाएगा. इसलिए इंटीग्रल टर्म इसलिए होते हैं ताकि वैल्यूज तक बहुत कम हो, एरर बहुत कम हो, तब के लिए इंटीग्रल टर्म ऐड रखा जाता है. ये हम ये कांस्टेंट्स क्यों यूज करते हैं? कांस्टेंट वो अपने हिसाब से चेंज करने के लिए, मतलब ताकि हमेशा वैल्यूज एरर के इक्वल थोड़ी ना होती है, वो एरर के प्रोपोर्शनल होती है. जैसे प्रोपोर्शनल टर्म है, ये एरर के प्रोपोर्शनल होगा. फीडबैक जो होगा वो एरर के प्रोपोर्शनल होगा. फीडबैक जो होगा वो चेंज इन एरर के प्रोपोर्शनल होगा करना होता है. हमें डायरेक्टली इक्वल नहीं करना होता, इसलिए कांस्टेंट टर्म इसे ऐड मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे. ठीक है. और वो कांस्टेंट का वैल्यू कैसे पता लगता है? वो जनरली ट्रायल एंड एरर से पता लगाते हैं मोस्टली. ओके. भैया हेलो. हाँ भैया आपने अभी जो ओवरशूट कहा वो मुझे समझ नहीं आया. यहाँ पे मतलब क्या है उसका? अच्छा, मतलब क्वेश्चन ये था कि सिर्फ इंटीग्रल टर्म ही क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग सिर्फ इंटीग्रल टर्म ही क्यों नहीं यूज करते. मतलब प्रोपोर्शनल टर्म और डेरिवेटिव टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इंटीग्रल टर्म यूज करते हैं.
ठीक है, हाँ भैया। क्या ही पूछ रहे हो ना इसी का? नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था, आपने बताया था कि ओवरशूट हो जाएगा, तो वो मतलब नहीं समझ में आ रहा कि ओवरशूट क्या है यहाँ पे। ओवरशूट मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बहुत ज्यादा होने लगेगी। समझो अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे है, ओके, हाँ भैया। पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे है, वो वो अपना एरर मतलब वो फीडबैक कंट्रोल करते करते ब्लू लाइन तक पहुंच गया। ओवरशूट हो जाना मतलब राइट साइड में चले जाना, ब्लू ब्लू लाइन के ऊपर है भी समझो, वो फीडबैक हाँ भैया। निकालते निकालते ब्लू लाइन पे वापस आ गया, एरर सही कर दिया, जीरो कर दिया, फिर ब्लू लाइन के अगर नीचे चले गया वो, उसे कहते हैं ओवरशूट हो जाना। ठीक है भैया। अभी मैं एक और एग्जांपल समझाऊंगा ड्रोन की हाइट की कंट्रोलिंग का। मतलब समझो ड्रोन को हमें 3 मीटर की हाइट पे कंट्रोल करना है, ओके। पहले ये वाला समझा देता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले एक एरर आएगा, ठीक है, जो ये एरर टर्म तो समझ आ गया होगा। सबसे पहले एरर आएगा, उसको हम लोग इन तीनों टर्म से पास करेंगे, तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे, प्रोपोर्शनल टर्म, इंटीग्रल टर्म, डेरिवेटिव टर्म, ठीक है। फीडबैक मिलेगा उससे, फीडबैक मतलब कितना फोर्स लगाना है, कितना एंगल टर्न करना है, इस हिसाब से वो, और फिर वो प्रोसेस होगा, मतलब टर्न होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी कार की, और फिर वापस से एक एरर टर्म मिलेगा। इसे कहते हैं हम लोग कंट्रोल लूप मैकेनिज्म, पीआईडी कंट्रोल लूप मैकेनिज्म है। अब मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ पीआईडी में ड्रोन की हाइट कंट्रोलिंग से, ठीक है। हाँ, तो अभी सिर्फ इतने पार्ट पे ध्यान दो, इन 4 लाइन पे, ठीक है, पीआईडी कंट्रोल का। तो मैं इसकी वैल्यू समझो 0 कर दी अगर, हाँ, डी की वैल्यू 0 कर दी, और आई की भी वैल्यू मैंने 0 कर दी अभी के लिए, ठीक है। तो ड्रोन की हाइट कंट्रोल करने के लिए कितना फोर्स लगेगा? प्रपोज केपी वैल्यू, केपी इंटू एरर प्लस केडी इंटू डेरिवेटिव टर्म एंड प्लस इंटीग्रल टर्म के आई इंटू इंटीग्रल टर्म, ओके। सो हाँ, हाँ मैंने सेव नहीं की फाइल शायद, हाँ, देखो ड्रोन बहुत ज्यादा ओवरशूट कर रहा है। जब पी की वैल्यू जा पी की वैल्यू कितनी 5 रखी थी, और हम लोगों ने आई और डी की वैल्यू बहुत 0 को रख दी ना, आई और डी इंटीग्रल टर्म और डेरिवेटिव टर्म की वैल्यू 0, तो ड्रोन ओवरशूट कर रहा है। इनर्शिया, उसका इनर्शिया तो पता ही होगा आई थिंक, तो उसका इनर्शिया है, ठीक है। इनर्शिया की वजह से वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा है ना। पीआईडी हम लोग वो करते हैं, हम लोग असाइन करते हैं, राइट? हाँ, पीआईडी वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं। ओके, अब समझो हमने, हमारे यूज के हिसाब मैंने से। डी की वैल्यू 0 नहीं करी, क्या क्या कह रहे थे? हाँ, हमारे यूज के हिसाब से हम लोग पीआईडी वैल्यू डिफाइन करते हैं, राइट? हमारी उसके हिसाब से पीआईडी वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो मैंने डी की वैल्यू 0 से हटा दी, 1250 रख दी, ठीक है। हाँ, तो अब ड्रोन अपने आप यहाँ पे आ जा रहा है, पर उसकी वैल्यू जब 3 पर पहुंचनी हो तो हमें ड्रोन की हाइट कितनी रखनी है? 3 पर एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, तो हमें ड्रोन की हाइट चाहिए भी 3 पे, ठीक है। और
यहाँ पे ड्रोन की हाइट 3 पे पहुंच नहीं रही, क्योंकि उसका जो फोर्स लगना है वो बहुत ही कम हो रहा है, तो तब फोर्स लग नहीं रहा, और इस वजह से इसकी हाइट 3 पे पहुंच ही नहीं रही। हमने डेरिवेटिव टर्म और प्रोपोर्शनल टर्म ऐड कर दिया, उससे इनर्शिया तो कम हो गया, पर उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 3 तक नहीं पहुंच पा रही, वो 3 के आसपास ही रह रही है। और अब अगर हम लोग इंटीग्रल टर्म ऐड कर दे, ठीक है, तो ड्रोन की हाइट अपने आप 3 पे पहुंच जा रही है, वो 3 पे ही होवर कर रहा है। यही होता है पीआईडी कंट्रोल। अभी किसी को कोई डाउट है? ये मतलब वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन होते हैं या मतलब हम असाइन करते हैं? वैल्यू हम असाइन करते हैं अपने हिसाब से। वो कौन सी वैल्यू असाइन करनी होती है, ये ट्रायल एंड एरर से चेंज होता रहता है। ट्रायल एंड एरर से चेंज करना होता है कि ओवरशूट कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हमें इस टाइप से करना होता है। लेकिन जब ये हम स्टिमुलेशन जब हमने डेरिवेटिव नहीं स्टिमुलेशन लगाया था तब क्यों नहीं पहुंच रहा था, ये मैं नहीं समझा। कहाँ पे? जब हमने डेरिवेटिव नहीं लगाया था, जब हमने डेरिवेटिव का वैल्यू 0 रखा था, तब वो उस हाइट पे क्यों नहीं पहुंच रहा था? क्योंकि इसको जो फोर्स लगना है वो बहुत ही कम हो रहा था, तब फोर्स उसे लग नहीं रहा था, वो उसको ऑलमोस्ट 0 के अप्रोक्स जा रहा था फोर्स जितना लगना है। तो मतलब सारे वैल्यूज इंडिविजुअली करते क्या है, मतलब मैं एग्जैक्टली उनका यूज समझा नहीं। हम्म, तो प्रोपोर्शनल टर्म प्रेजेंट एरर के ऊपर होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट एरर जो है उसको वो प्रोपोर्शनल टर्म प्रेजेंट एरर के इक्वल होता है, और उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और इंटीग्रल डेरिवेटिव टर्म प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर एरर्स बेसिकली होता है, ठीक है। प्रेजेंट टर्म पे हम लोग कोई भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, मतलब कोई भी कांस्टेंट असाइन कर सकते हैं। हाँ, कोई भी कांस्टेंट असाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद और I have one doubt. डेरिवेटिव टर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि डैम्पिंग करा सके हम लोग। जब सिर्फ प्रेजेंट एरर को यूज करेंगे तो वो ओवरशूट कर जा रहा है, मतलब उसका इनर्शिया है, तो उस वजह से वो आगे चले जा रहा है, जहाँ पे जो उसे पहुंचना चाहिए उससे बहुत आगे पहुंच जा रहा है, तो उसके लिए डैम्पिंग इंट्रोड्यूस करानी होती है, जो जो होता है डेरिवेटिव टर्म, which is change in error term multiplied by a constant value। मतलब डेरिवेटिव टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन एरर टर्म के, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? हाँ, ओके। और इंटीग्रल इंटीग्रल टर्म इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एरर टर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या करता है, जैसे वो डैम्पिंग करता है तो ये क्या करता है? हाँ, इसको यहाँ पे समझाना होगा। तो जैसे कार है यहाँ पे, ठीक है, तो अरे यार, हाँ, कार अभी ब्लू लाइन पे चल रही है, ठीक है। तो अभी ये पेबल से टकरा के थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, तो उसे लग रहा है फोर्स तो कुछ लगना ही नहीं है, फोर्स उसको वो अप्रोक्सीमेटली फोर्स को 0 ही मान रहा है, फोर्स को अप्रोक्सीमेटली 0 मान रहा है, ठीक है। ओके तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रल टर्म ऐड करते हैं। ओके, मतलब वो उसको प्रिसाइज डिस्प्लेसमेंट को भी वो कर देता है, मतलब ठीक हाँ, कर देता है एकदम with प्रेसाइज। precise हाँ displacement को भी। ओके, और जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ डैम्पिंग लाता है, हाँ ओवरशूट ना हो जिससे। हाँ। तो और कोई डाउट है? भैया वो एरर अपने आप निकाल देता है ना? हाँ, जैसे यहाँ पे हम लोगों को ड्रोन की हाइट कंट्रोल करनी है अगर, तो एरर होगा ड्रोन की जो प्रेजेंट हाइट है माइनस ड्रोन की रिक्वायर्ड हाइट, एरर इस तरह से निकलता है। और जैसे हम लोगों को कार को 0,0 वाली ब्लू लाइन पे चलाना है,
तो ब्लू लाइन की पोजीशन माइनस कार की करंट पोजीशन, ये होता है एरर टर्म। ठीक है, हाँ भैया, पर वो अपने आप ही निकाल देता है ना, हाँ हमें असाइन करने की जरूरत नहीं होती है। नहीं, एरर टर्म अपने आप ही निकलता है। अच्छा भैया, फिर जैसा आपने अभी एक्सप्लेन किया अभी दूसरी बार में पीआईडी का डेफिनेशन, तो उस तरीके से फिर पी जो रहेगा कांस्टेंट टर्म हम लोग का पी, उसकी वैल्यू हम लोग रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं और फिर उसको नहीं हम लोग चेंज करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग फिर आई और डी को चेंज करते रहेंगे, मतलब ट्रायल एंड एरर जो हम लोग करेंगे। नहीं नहीं नहीं, तो हम लोग तीनों को चेंज करते हैं, हम लोग तीनों को चेंज करते हैं। इन तीनों का सम ही, भैया एक क्वेश्चन, इन तीनों का सम इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आई और डी की वैल्यूज चेंज करते रहें सो जाएगा, तीनों की वैल्यूज सही होनी चाहिए। हाँ सतीश, भैया भैया बोलो, कोई एक बोलो। सर अगर हम तीनों की वैल्यू सेम रखे तो क्या होगा? तीनों की वैल्यू सेम रखे तो क्या होगा? हाँ, इसको कैसे समझाऊं अब? वो तो तीनों की वैल्यू सेम रख सकते हैं, हो सकता है तीनों की वैल्यू सेम, पर वो मेन कंट्रोल होना चाहिए। जैसे ये है, तो यहाँ पे ब्लू लाइन पे पहुंचाना है कार को हम लोगों को, और ये वाला एग्जांपल है, हमें ड्रोन को 3 मीटर की हाइट तक पहुंचाना है। ठीक है, अब तीनों की वैल्यू अगर सेम हो रही है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तीनों की वैल्यू सेम हो सकती है, पर जनरली वो नहीं होती है सेम। वो क्यों नहीं होती है, कैसे समझाऊं? मतलब तीनों की वैल्यूज को एग्जैक्ट रखना ही इम्पोर्टेंट होता है ना, तो अगर जरूरी नहीं है जब वो सेम हो तभी एग्जैक्ट होगी। तो हम लोग वैल्यूज हिट एंड ट्रायल से नहीं डालते क्या? हाँ, हम कैसे लोग डालते हैं मोस्टली हम हिट लोग एंड ट्रायल से डालते हैं वैल्यूज को। हिट एंड ट्रायल से डालते हैं? हाँ भैया जो प्रोग्राम था, क्या उसमें आप तीनों वैल्यू सेम रख के दिखा सकते हैं हम लोग को कि कैसा फिर उसमें आउटपुट निकलेगा? ठीक है, रख के दिखा सकता हूँ, स्क्रीन तो विजिबल ही होगी, है ना? इसकी वैल्यू 5 रख रहा हूँ, इंटीग्रेटिव टर्म की, डेरिवेटिव टर्म की भी वैल्यू मैं 5 रख रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये बहुत ज्यादा ओवरशूट कर रहा है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा इक्वल वैल्यूज को इक्वल रखने पर। पर वैल्यूज को ऐसे रखने पर ये कंट्रोल हो जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया? भैया एक मेरा क्वेश्चन है, लाइक कि हमें नंबर्स को हिट एंड ट्रायल्स रखने हैं, तो फिर ऐसा कोई रेंज होता होगा ना, नहीं तो फिर कि हम लोग वो कर सके, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लाइक होंगे नंबर्स। मोस्टली 0 से लेकर 10 में हो जाता है, 0 से लेकर 100 में होता है मोस्टली, और कभी कभी रेंज नहीं भी होती है ना, तो हमें कुछ ही रेंज, हम लोग एक कैलकुलेटर कंट्रोल मेथड होता है, उससे वैल्यूज फाइंड करते हैं। जब उससे ये पीआईडी की वैल्यूज फाइंड करते हैं, एलक्यूआर कंट्रोल सिस्टम होता है, वो पीआईडी से ज़्यादा बेटर होता है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट, वो तुम लोगों के लेवल का नहीं है अभी। हम लोग जब पीआईडी की वैल्यूज निकालना बहुत मुश्किल हो और नहीं निकल रही हो, तो हम लोग एलक्यूआर कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी। भैया हम्म, भैया मुझे वो ड्रोन्स के जो मोटर का रोटेशन है वो समझ नहीं आया। ड्रोन्स के रोटेशन का मोटर, ड्रोन्स के मोटर्स का मो- रोटेशन हाँ भाई, कौन सी वाली स्लाइड में समझ नहीं आया? मतलब कैसे आपने बताया कि काउंटर में, मतलब जैसे एक फैन मूव कर रहा है तो दूसरा काउंटर क्लॉक मतलब ऐसे ही मूव करेगा, उसका फंक्शन क्या है, मतलब और क्या यूज है? मतलब मैं समझ रहा हूँ ये वाला, मतलब ये जेड एक्सिस के हाँ रोटेशन के अबाउट का समझ नहीं आया।
जैसे भैया ऊपर वाले अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में राइट वाला रोटेट कर रहा है तो उसके जस्ट नीचे अच्छा, वाला ये मतलब वो टॉर्क को बैलेंस करने के लिए होता है, मतलब एंटी तुम ये कह रहे हो ये दोनों प्रोपेलर्स जो हैं हम लोग इन्हें प्रोपेलर्स कहते हैं, ठीक है। वो भी है इसी वर्कशॉप में ही है, आज ही पढ़ोगे। इन्हें प्रोपेलर्स कहते हैं। तो हम लोग ये कह रहे हो कि ये वाला प्रोपेलर और ये वाला प्रोपेलर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये दोनों हाँ प्रोपेलर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऐसा क्यों होता हाँ है? हाँ यही पूछ रहे हैं। तो ऐसा टॉर्क को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ठीक है भैया। और भैया इसमें लेफ्ट रोटेट करना हो तो ये रेड वाला जो दिखा रहे हैं इसका मतलब वो है कि उसका स्पीड ज्यादा है। हाँ, ओके। जैसे मतलब लेफ्ट रोटेट करना है अगर, तो ये दोनों की स्पीड ज्यादा होगी, जो वही लगा था। बैक राइट, हाँ ठीक है, समझ गए ना। यस। सो भैया ये पीआईडी के बारे में थोड़ा और जानना हो तो कैसे करें? यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं अच्छी, देख सकते हो वो। ओके। भैया हम्म, जो प्रिंसिपल आपने जैसे वो मोटर कार में दिखाया था सिमिलर प्रिंसिपल ड्रोन में भी होता है? हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रिंसिपल ड्रोन में भी होता है। मतलब ठीक बस है भैया। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम लोगों को कार को ब्लू लाइन के अक्रॉस चलाना है, एकदम मिड पे चलाना है। और कहाँ ये, हाँ, यहाँ पे हम लोग ड्रोन की हाइट को कंट्रोल करना है। सेम ही प्रिंसिपल है ऑलमोस्ट। ठीक है भैया। ठीक है, आई गेस अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तू शेयर कर ले अपनी स्क्रीन। हाँ मैं शेयर करता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, तो ठीक है, आई होप अब तक थोड़ा बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि ड्रोन कैसे काम करता है। नाउ आई विल टेक यू थ्रू हाउ यू कैन असेंबल योर ओन ड्रोन। तो ब्रॉडली पहला चॉइस क्या बनाना होगा कि तुम्हें कौन से मोटर्स यूज़ करने हैं, क्योंकि उसी पे बाकी कंपोनेंट्स भी डिपेंड करेंगे। तो मेनली हमारे पास होते हैं ब्रश मोटर और ब्रशलेस मोटर। तो जो ब्रश मोटर है वो यूजुअली स्मॉल नैनो ड्रोन्स में यूज़ होते हैं और ब्रशलेस ज़्यादा वैरायटी के ड्रोन्स में यूज़ होते हैं। मोस्टली हम ब्रशलेस ही यूज़ करते हैं और बहुत रेयर केसेस में बस जब बहुत छोटा ड्रोन होता है तब ब्रश मोटर यूज़ करते हैं। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट brushless motor here. Now the components you will require are brushless DC motor, also you can call it Bldc motors, and electronic speed controller that will operate your BLDC motors, a battery of course, power distribution board, flight controller board, propellers, RxTx receiver pair, and a frame to put it all together. And इसके बाद भी एडिशनल कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, जैसे GPS हो गया और तुम एक्सटर्नल जैसे रास्पबेरी पाई हो गया, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स वैसे ऐड कर सकते हो, कैमरास ऐड कर सकते हो। तो ये प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट BLDC मोटर्स। तो काफ़ी वाइड वैरायटी के ड्रोन्स में यूज़ होते हैं ये, फ्रॉम ले लो 14-15 इंच के ड्रोन या फिर 4-5 इंच के ड्रोन, सब में ये यूज़ होते हैं। एंड दे कम विद दिस थिंग कॉल्ड अ KV रेटिंग। तो it basically represents the speed at which the motor rotates for every volt applied. जैसे ये example ले लो तुम, this is 1000 kV, so if you apply let's say 12 volt, uh, it will rotate at 12,000 RPM with no load. So when selecting the motor, general rule of thumb is to go for at least a
2:1 thrust ratio. Now keep in mind that's the bare minimum, so the higher the better. तो ये तुम्हारे एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि तुम ड्रोन के साथ क्या करना चाहते हो. तो मिनिमम 2:1 रखते हैं, और कुछ एप्लीकेशंस में जैसे तुम्हारा FPV रेसिंग हो गया, उसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स मैनूवर्स करने रहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा thrust to weight ratio चाहिए होता है. Sometimes it can go to like 12:1, 13:1 as well. So to control the BLDC motors, you're gonna need a electronic speed controller. This is very important. तो उसमें नोटिस किया होगा कि 3 वायर्स होते हैं BLDC मोटर्स में, अनलाइक योर नॉर्मल DC मोटर्स. तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है, तुमको मोटर के किसी भी 3 वायर्स को इसके किसी भी 3 वायर से कनेक्ट कर सकते हो. And you have, of course, negative and positive terminal that goes directly to your battery, and another one for the signal that comes directly from your speed control, flight controller. So this is how you connect your motor to the ESC. If अगर कोई भी 2 वायर्स को एक्सचेंज करते हो तो मोटर का रोटेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, and order of course doesn't matter here. So this is a layout of how you connect the ESC. Primarily you're gonna need just 2 wires to connect to the ESC from the flight controller. That's the signal which the flight controller basically tells the motor how fast it needs to run, etc. So that's communicated through just the signal wire, and ground is just for the reference of the signal. Then you're gonna need a battery. So most commonly used lithium polymer batteries because it's lightweight and has a high current rating. So there are gonna be a few parameters on your battery which you will decide according to what you want your drone to do, how much flight time you want. So the capacity it's given in milliamp hour. It's basically indication of how much current you can draw from the battery for an hour until it's empty. And another parameter is the C rating. It just refers to the maximum discharge rate of the battery. And the cell count. So this is a battery that consists of 4 cells, henceforth 4S, and each cell is 3.7 volts. So giving you a total of 4.8. That main lead you see here, this connects to your electronic speed controller. Yeah. So you just saw the battery. Now this power module is actually optional that you can use to monitor the power left in your battery. This connects to your flight controller. So distribution board is just to distribute the power between the 4 ESCs. So the flight controller board, this is your, I guess you can say, the brain of your drone. Those PID functions Chuck talked about, this is what happens in the flight controller. The main function is just to do all the calculations and send the signal to your ESCs. It has a set of sensors. It basically calculates your orientation of your drone, and yeah. So your flight controller consists of a microcontroller unit that does the calculations, and another main component is your inertial measurement unit. It contains an accelerometer and a gyroscope, using which you can estimate your orientation of your quadcopter. So this is the STM32 microcontroller, which is very commonly used in flight controllers, and this is another IMU. Now, flight controllers come in many
form factors. So these are some of the common ones. This is mainly used in FPV drones. This is a more, I guess, modular version than that you can use for many different applications. You can connect GPS, you can connect a Raspberry Pi, a camera, etc. And another important component is a propeller. This basically transforms your rotary motion into linear thrust. So thrust at was provides the lift by spinning and creating an airflow. So these are just some CFD simulations of a drone. You can see the total pressure under the drone increases when the propellers are rotating. Similarly, you have the velocity diagram as well. The velocity under the drone increases because of the propellers. Then this is what you use to just communicate with your drone. I see a few hands raised. You can tell what's the problem. Yeah, Bhaiya, I wanted to ask that in that diagram you mentioned that there ESC, so I just failed to understand what actually is this. Sorry, I can't hear you. 1 sec. Hello, am I audible? Yeah, you're audible now. Yeah, Bhaiya, I was asking that in a previous diagram you mentioned something called ESC. I just Yeah. failed to understand what it is. Oh, the ESC is just the electronic speed controller. You need this to control your BLDC motors. You can't directly connect it to your flight controller. Okay, I got it. Thank you. Anyone else has a question? भैया ये Aditya लिथियम Raj. बैटरीज चार्जेबल होते हैं? Sorry? ये लिथियम बैटरीज चार्जेबल होते हैं? Yeah, it's chargeable. Bhaiya, Yeah. I wanted to ask that what is the difference between the 3-blade propellers and the 2-blade propellers? In the 3-blade and 2-blade, right? Means they affect anything on the drone? Usually you're just gonna use the 2-blade ones, but suppose you essentially that doesn't make that big of a difference, but mostly for quadcopters you just use the 2-blade ones. I think for single blade rotor drones you use the 3-blade ones sometimes. For quadcopters you're mostly gonna use the 2-blade ones. Okay, Bhaiya. So to communicate with your drone, you're gonna need a receiver and a transmitter pair. The receiver is gonna connect to your flight controller, obviously, and you're gonna hold the transmitter. So it uses a 2.5 gigahertz spectrum signals, and from the transmitter you can give the throttle, you can give the yaw, roll, pitch, and everything. So, and to put everything together, you're gonna need a frame. So this is an example of an H-shaped frame. These are both X-shaped. That again is gonna depend on your what you're gonna use the drone for. This one's I guess mainly for FPV aircrafts, and this has another wide variety of uses because it has a lot of space for additional components. And this is how you will put everything together. This is just an example connection diagram. Now this can also differ a little bit depending on the flight controller. So this is your power distribution board. Battery connects directly to it. The ESCs will connect to it.
and you'll notice that this purple wire goes to the flight controller from the ESC. Now the flight controller is gonna tell how fast it wants the motors to spin. So that is communicated through this purple wire that goes to the ESC. The buzzer, it's an additional component. This is your receiver. And again, GPS module, RGB LED strip, these are additional components you can add to your flight controller. Now let's take What is? Yeah. Just previous slide, I have to ask. Yeah, here, what is NACE 32 REV6? NACE 32 is just a flight controller. Oh, There are many okay. different brands of flight controllers. This is just one of them. And flight controller includes the PDI, means the PID control, PID control. The flight controller is what does the PID calculations. Okay. Yeah, I want to ask that with the assembly parts that you said, in all these, how many parts are made by us in this in the college level? That's up to you, I guess, what you want your drone to do. The bare minimum is gonna be just your flight controller, receiver. In place of receiver also, you can, I guess, make your own based on Wi-Fi if you don't want to use radio control. And that is important. ESCs and motors, of course, and the power distribution board. Others are just optional components. No, I said how many of that are we are going to buy it ready-made, and how many of we can make it our own. So motors, ESCs, power distribution boards, of course, you're gonna buy them on their own. Flight controllers, you can design one on your own using maybe different development boards are available. You can program your own flight controller, but that's going to be little tough. You can code your own PID functions into them and everything. But mostly people use ready-made flight controllers and load different firmwares are available that already have everything coded into it. You just need to assemble everything together and it's ready to go. But another part you can take is you can make the flight controller and receiver on your own, and everything else you need to buy. And frame? Frame, yeah, it's just better to buy your frame on your own because you need the frame to be very reliable, right? So. Okay. Any other questions? Okay, let's move on to the use cases. So you may already know the drones are very versatile. So they can be used in many different cases, search and rescue, terrain modeling, even in the defense sector, there's a lot of demand for drones these days. Ultimately, it's up to you. You can also make your own use case for your drone, model it according to your needs. Yeah, that's it, I guess, from us. Thank you for attending. And if anyone has any questions, they can ask it right now. Yeah, Bhaiya, I wanted to ask. Yeah. That just now you showed the the versatile uses of the drone. So basically, what type of structural changes do we make in drone that they can perform such a different types of functions and all? For different functions, you're gonna need several additional components. Like suppose you just want to fly it for fun, you're gonna need just the minimum components. If you want it to just autonomously fly without your interference, you're gonna need to add uh, a small computer to it, like a Pi or a NVIDIA Jetson.
if you want to conduct surveillance, you're going to need a camera. In terms of the basic like shape and size of the quadcopter, that's I guess not going to change much. You're not going to design your own frame for, you know. Okay, yeah, use. got it. Thank you. Anyone else? Yeah, I want to ask you, can you refer such some materials to read about aerodynamics? Aerodynamics of a drone? Yeah, I guess there are many courses. You can find aerodynamics courses on NPTEL as well. If you want to learn more deeply about it. To build a drone, you're not going to need much knowledge about aerodynamics, but if you want to learn about it, so you can find many good resources on the internet. Any book, Vijay? Any book? I'm not aware of quadcopters, but In general, for just aircrafts, I do have a book suggestion for you. One sec. Yeah. In general, this book called this Aircraft Design by Daniel Riemer is a very popular book when it comes to aircraft design. You can read that if you're interested in that. Name, can you say last name by whom? Daniel Riemer. Okay. Thank you, Vijay. Anyone else has a question? Bhaiya, will you be providing the coding that the Chahak Bhaiya was doing? Yeah, you can freely approach anyone for that. You can approach Jack as well. He I can will give you the exact code for I that. will provide you some videos, YouTube videos based on PID control, but the code you will not be able to understand that code. I can share you the code, but you will not be able to understand it. Bhaiya, will we be given any assignment based on this? Yes, maybe. Uh, Maybe I will post it an assignment based on this. Maybe then in quiz, either a quiz or simulation in VBots. In the next workshop, you will learn about working in VBots, and uh, I will only give assignment in VBots based on VBots only. And currently, I was showing you simulations in PyBullet, okay, which is different, and you will not be able to understand the code that I will share now. If I shared it now. But I will definitely share you some good YouTube videos based on PID control. Okay. So, Bhaiya, will we have a session on PyBullet? Not now, maybe. Aeronav and both Technex require only VBots for AMC. And Robotics Club, you had in session. There was a session on PyBullet, but in Aero-Modelling Club, we will not have any session on PyBullet. We won't ever get any assignment related to the drones, means the physical drones, for making physical drones. We won't give you an assignment over it, but yeah, you can definitely try building your own. Okay.
भैया यहाँ पर जो सर्किट बनाए हमने वो कुछ सॉफ्टवेयर में बनाएंगे क्या हम? सॉरी, फिर से बोल सकते हो? भैया जहाँ हमने यहाँ पर कुछ सर्किट यूज किए थे ना, वो हम कोई फिजिकल सॉफ्टवेयर में बनवाना सिखाएंगे क्या? सर्किट? कौन से सर्किट की बात कर रहे हो? जो ड्रोन के हाँ, जो को सर्किट्स थे उनकी बात कर रहे थे। नहीं, वो सॉफ्टवेयर में नहीं बनेंगे, वो फिजिकल कंपोनेंट्स कनेक्ट किए गए हैं। ओके। सॉफ्टवेयर में तुम फ्लाइट कंट्रोलर का कोड लिख सकते हो, वो अलग टॉपिक है। भैया मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे ऐड कर सकते हो आप या फिर लिंक भेज दे सकते हो?